In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor M.Masood. Welcome to our channel, Easy English with Professor M.Masood. आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे साउंड ऑफ W. W की आवाज़ सही तरह से निकालने के लिए आपने अपने होंठों को गोल करना है और फिर वापस उनको अपनी पोजीशन पर लेकर जाना है। एक बात आप ज़हन में रखें कि V और W की जो आवाज़ में डिफरेंस है, W में हमने लिप्स को राउंड करना होता है, जबकि V में हम होंठों को गोल नहीं करते, बल्कि जब हम V की साउंड बोलते हैं तो वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन पैदा होता है, जबकि W की आवाज़ में वाइब्रेशन नहीं होता। तो आइए अब हम इसकी एग्जांपल देखेंगे और एग्जांपल से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम इसको कैसे बेहतर तौर पर प्रोनाउंस कर सकते हैं। विंड यानी पहला जो लफ्ज़ है विंड, जैसा कि मैंने शुरू में बता दिया है कि होंठों को गोल करना है और फिर उनको वापस वे पीछे लेकर जाना है। वेल, वेल, व्हाट, व्हाट, when, where, which। देखिए, अगर हम लिप्स को राउंड नहीं करेंगे तो W की सही आवाज़ नहीं आएगी। इसलिए ये बात मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि आपने W की जब भी आवाज़ प्रोड्यूस करनी है, लिप्स को राउंड करके वापस उनको अपनी जगह पर लेकर जाना है। वाइट, वाइट, weep, weep, work, work, win, win, one, why, एक्सक्यूज़ मी, आपने ये बात देखी होगी कि इन W अल्फाज के अंदर जो वन का लफ्ज़ है वो भी हमने शामिल किया है सिर्फ साउंड की वजह से। हालांकि वो W से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ONE, लेकिन यहाँ O जो है ये साउंड W जैसी दे रहा है, जैसे वन। और इसके लिए भी आप लिप्स को राउंड करेंगे और लिप्स को इसी तरह पीछे लेके जाएंगे, वन। आइए इसकी कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। वाटर, इसे वाटर नहीं कहना, द राइट वर्ड इज वाटर, water, world, world, whistle, whistle, windy, windy, swim, swim, swallow, swallow। अब आप नोट कीजिए कि इनमें लास्ट में जो टू वर्ड्स पढ़े हैं, स्विम ऐसे स्टार्ट हो रहा है, सेकंड लेटर जो है वो W है, तो लेकिन इसकी जो आवाज़ है वो वैसे ही प्रोड्यूस होगी जैसे कि हम स्टार्ट में इसकी करते हैं। इसी तरह ऊपर स्वेलो, तो यहाँ W की साउंड जो है वो भी वैसे ही आएगी जैसे W शुरू में होता है। आइए से हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। swirling, swirling, quilt, quilt। अब यहाँ पर क्विल्ट यानी QU है, लेकिन जो साउंड है वो W की दे रहा है, इसलिए हमने इसको इंक्लूड कर लिया कि क्विल्ट U से भी W की साउंड आती है। क्विल्ट, ट्विन, ट्विन, swollen, swollen, swabbing, swabbing, sworn, sworn, twice, twice, between, between, queen, queen, dual, dual, sweet, sweet, dwindle, dwindle। प्लीज़ नोट दिस पॉइंट कि समटाइम्स मैं एक वर्ड को
एक्सेजरेट करके बोलता हूँ ताकि आप उसको इसी तरह आप भी एक्सेजरेट करें, ताकि जब आम कन्वर्सेशन में आप ये लफ्ज़ यूज़ करेंगे दे विल बिकम नॉर्मल, फिर ये आम अल्फाज जैसे हो जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिस करते वक्त हमें एक्सेजरेशन से काम लेना चाहिए। आइए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल्स में वी और डब्ल्यू का डिफरेंस देखते हैं कि वी की साउंड कैसे आती है और डब्ल्यू की कैसे। देखिए, ये बात मैंने शुरू में बताई थी कि वी की आवाज़ में वोकल कॉर्ड के अंदर वाइब्रेशन पैदा होता है, जबकि डब्ल्यू में नहीं होता, और वी में हम लिप्स को राउंड भी नहीं करते, जबकि डब्ल्यू की आवाज़ में हमने लिप्स को राउंड करके वापस लेके जाना होता है। आप इस डिफरेंस को दोनों वर्ड्स की रीडिंग में नोट कीजिएगा। वेट, 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 वेस्ट, 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 वाइन, 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 very, 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 wove, wove, wow, wow, van, van, when, when। ये था डिफरेंस वी और डब्ल्यू के साउंड में। अब हम टंग ट्विस्टर्स की तरफ चलते हैं ताकि हम इनकी बेहतर प्रैक्टिस कर सकें। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम टंग ट्विस्टर्स को एक ही सांस में बोलने की कोशिश करते हैं और एक्सैजरेशन से काम लेते हुए इसकी बेहतर प्रैक्टिस करें। We well at the we well, we well at the we well, a well-woven we well weaves wears well, a well-woven we well weaves wears well. All the world and his wife were there. Willie went walking while whistling whimsically. Willie went walking while whistling whimsically. Winnie watched wild wolves waltzing in the woods. Winnie watched wild wolves waltzing in the woods. Wendy wore white woolen gloves while weaving. Wendy wore white woolen gloves while weaving. Walter wanted wacky watermelons with walnuts. Walter wanted wacky watermelons with walnuts. Wesley waved wildly at the warning whales. Wesley waved wildly at the warning whales. Wendy's wagon wobbled wildly on wet roads. Wendy's wagon wobbled wildly on wet roads. Wendy washed white woolen washcloths weekly. Wendy washed white woolen washcloths weekly. Wendy whispered whimsical wishes while walking. Wendy whispered whimsical wishes while walking. आइए अब हम इसी W साउंड की कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करते हैं। I hope you will enjoy it. W conversation में कैसे यूज होता है। Edward, Rowena, are you awake? Edward, Rowena, are you awake? Rowena, what, Edward? What's wrong? What time is it? Rowena, what? Edward, what's wrong? What time is it? Edward, oh, about 2 o'clock. Edward, oh, about 2 o'clock. Rowena, in the morning? Oh, go away. What are you doing? Rowena, in the morning? Oh, go away. What are you doing? Edward, come to the windows, Rowena. Edward, come to the window, Rowena. Look, the whole world's white. There's a wicked wind blowing. Edward, come to the window, Rowena. Look, the whole world's white. There's wicked wind blowing. Rowena, oh, waxing poetical. You're off your head. I always knew it. Why are you wearing your Wellingtons? Rowena, oh, waxing poetical. You're off your head. I always knew it. Why are you wearing your Wellingtons? Edward, I want to go out and wander in the woods. Edward, I want to go out and wander in the woods. So this was the sound of W. I hope you must have enjoyed. आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और बार बार जुमलों को बोलेंगे, लफ्ज़ों को सुनेंगे. It will really help you to pronounce W in the proper way. आप सही तौर पर W को pronounce कर सकेंगे. I think that's enough for today.
इंशाल्लाह अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच. विश यू बेस्ट ऑफ लक. टेक केयर. गुड बाय फॉर नाउ.